Hello बच्चों, let's read this question. In the given table, the first column shows the lower fixed point, column 2 shows upper fixed point, and column 3 gives corresponding divisions on the scale for three different scales for temperature measurement. We have to determine the features of Rankine scale if column 1 में हमें lower fixed limit दी गई है, कॉलम 2 में हमें अपर फिक्स पॉइंट दी गई है एंड कॉलम 3 में हमें करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डिविजन्स दिए गए हैं. फॉर दैट, फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट which is in the Rankine scale is a temperature scale in which the freezing point, the freezing and boiling points of water are 492 and 672 rankings respectively. That is, अगर ये रैंकिन स्केल है तो इस पर 492 रैंकिन वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा और 672 रैंकिन वाटर की बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा. सो वी कैन राइट द बेस पॉइंट्स of this scale are melting point, and boiling point of H2O, at normal pressure, so there are 180 rankings difference between those values, between those values. So then that the lower limit of Rankine scale is 492 Rankine and upper limit of this Rankine scale is 672 Rankine, and the difference between 672 and 492 is 180 Rankines, and this corresponds to M3 and 2, M32, that is option B. So option B is the correct option of this question. मोर स्टूडेंट्स, अगर हमें रैंकिंग स्केल को कन्वर्ट करके किसी और स्केल में कन्वर्ट करना हो तो हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, डेट इज टेम्परेचर इन रैंकिंग माइनस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन रैंकिंग स्केल अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर in Rankine scale minus freezing point of water in Rankine scale, and this remains constant for every units. That is temperature in Rankine minus 492 Rankine upon 72 minus 492. For converting this ranking into Fahrenheit, let's say temperature in Fahrenheit minus 32, which is the freezing point of water in Fahrenheit scale, and 212, this is boiling point of water in Fahrenheit scale minus 32. And if we have to convert this in Celsius, so temperature in Celsius minus its freezing point, it is 0 degree Celsius, upon boiling point of water 100 degree Celsius minus freezing point. So this is the relation. So I hope आपको ये concept समझ आया students. Thank you.